Hello, you're watching Hornbill TV's Primetime Bulletin. Now headlines. Defence Minister Rajnath Singh on Thursday hailed India's armed forces for successfully targeting and destroying terror camps in Pakistan and POK under Operation Sindoor. Indian armed forces targeted air defence radars and systems at a number of locations in Pakistan on Thursday. According to the Defence Ministry, it has been learned that an air defence system at Lahore has been neutralised. Abdul Rauf Azhar, a globally designated terrorist and the mastermind of the IC-814 Air India flight hijacking, was killed in Indian Armed Forces missile strikes on terror launch pads in Pakistan's Punjab and POK under Operation Sindoor, sources said. Several flights scheduled for arrival and departures from Delhi airport were cancelled interstate due to the closure of airspace and said airport sources. Now let's have a look at the news in detail. Defence Minister Rajnath Singh on Thursday hailed India's armed forces for successfully targeting and destroying terror camps in Pakistan and POK under Operation Sindoor. While addressing the National Quality Conclave at DRDO, Singh said that the 9 terrorist camps were destroyed and a significant number of terrorists killed in the operation. The Defence Minister said the precision with which Operation Sindoor was executed is unimaginable, very praiseworthy. 9 terrorist camps were destroyed in it and a significant number of terrorists were killed. This operation was carried out without harming any innocents and with minimum collateral damage. Earlier on May 7 morning, India executed a coordinated assault using long-range, high-precision strike weapons. An attack in which 26 people were killed remains underway, making it challenging to provide an exact casualty count of the terrorists at this stage, sources further stated. साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारी आर्म फोर्सेज ने कल जो कार्रवाई की है और जय हिंद जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है वो हम सबके लिए एक गौरव का विषय है। साथियों, आप सभी नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव का आयोजन ये आपका चल रहा है। क्वालिटी की क्या भूमिका होती है, यह क्या रोल अदा करती है, इसका नमूना हमने कल देखा। जिस प्रेसिजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। ऐसे में इस क्वालिटी कॉन्क्लेव को मैं बड़े महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव के रूप में देखता हूं। मैं इस आयोजन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और इनके सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री संजीव कुमार को भी हार्दिक बधाई देता हूं।
Indian armed forces targeted air defense radars and systems at a number of locations in Pakistan on Thursday. According to the Defense Ministry, it has been learned that an air defense system at Lahore has been neutralized. The ministry said India's response has been in the same domain with the same intensity as Pakistan. Pakistan attempted to engage a number of military targets in northern and western India, including Awantipura, Srinagar, Jammu, Pathankot, Amritsar, Kapurthala, Jalandhar, Ludhiana, Adambur, Patinda, Chandigarh, Nal, Phalodi, Uttarlai and Puch using drones and missiles last night. These were neutralized by the integrated counter-UAS grid and air defense systems. The debris of these attacks is now being recovered from a number of locations that prove the Pakistani attacks. The ministry said Pakistan has increased the intensity of its unprovoked firing across the line of control using mortars and heavy caliber artillery in areas in Kupwara, Baramulla, Uri, Punch, Mentar and Rajouri sectors in Jammu and Kashmir. The ministry said 16 innocent lives have been lost, including 3 women and 5 children, due to Pakistani firing. In retaliation, India was compelled to respond to bring mortar and artillery fire from Pakistan to a halt. Indian armed forces have reiterated their commitment to non-escalation, provided it is respected by the Pakistani military. During the press briefing and Operation Sindoor yesterday, India had called its response as focused, measured and non-escalatory. It was specifically mentioned that Pakistani military establishments had not been targeted. It was also reiterated that any attack on military targets in India will invite a suitable response. Abdul Rauf Azhar, a globally designated terrorist and a mastermind of the IC-814 Air India flight hijacking, was killed in Indian Armed Forces missile strikes on terror launch pads in Pakistan's Punjab and POK under Operation Sindoor on Wednesday, sources said. Azhar was the supreme commander of Jaish-e-Mohammed, the terror outfit founded by his brother and another water terrorist Masood Azhar. He was among the most wanted terrorists by India for his roles in terrorist activities in Jammu and Kashmir. 10 family members of Masood Azhar were killed in the Indian strikes on JEM's headquarters in Pakistan's Bahawalpur, while Azhar was among those critically injured until Wednesday. He reportedly succumbed to injuries later. In Pakistan's Punjab province, the Indian armed forces conducted strikes in Bahawalpur and Murtike, targeting and destroying the headquarters of Jaish and Lashkar, 2 terror groups responsible for years of bloodshed and attacks on Indian soil. Azhar was a Pakistani Deobandi jihadist cleric and militant who served as the supreme commander of Jaish-e-Mohammed. He assumed leadership of the group on 21 April 2007 and was one of India's most wanted individuals due to his long history of orchestrating attacks against the country. At just 24 years old, Rauf Azhar masterminded the hijacking of Indian Airlines flight IC-814 in 1999, an operation that ultimately led to the release of his elder brother, JEM founder Maulana Masood Azhar. Since then, he has been behind every major attack carried out by the group in India, including the 2001 Fidaiin attacks on the Jammu and Kashmir Legislative Assembly and the Indian Parliament, the 2016 Pathankot Air Base attack, as well as assaults on army camps in Nagroda and Katwa. He was also linked to the 2019 Pulwama suicide bombing that killed 40 CRPF personnel. Indian intelligence agencies and the National Investigation Agency report that Azhar used to take nearly all operational decisions for JEM, especially in the absence of his ailing brother. During a period when JEM went underground following attempts on then Pakistani President Pervez Musharraf's life, Rauf Azhar played a central role in rebuilding the group by traveling to Afghanistan and coordinating with the Taliban. Several flights scheduled for arrival and departures from Delhi airport were cancelled in Thursday due to the closure of airspace, said airport sources. These 90 cancelled flights, including 46 domestic departures and 33 domestic arrival flights, while it included 5 international departure and 6 international arrival flights. These cancelled flights were scheduled between 8 a.m. and 2 p.m. This comes in the aftermath of the Indian Armed Forces Operation Sindoor against Pakistan.
As per the central government, 21 airports in North and Northwestern India will remain shut till May 10. Several major cities across northern India have been placed on high alert. As part of heightened security measures, several airports across India have been shut down until further notice. Airlines like Indigo, Air India, SpiceJet, Agasa Air, Air India Express have been cancelled and rescheduled. We'll be right back after a short break, so stay tuned for more news. घर लाएं काम वाला सीमेंट। ब्लैक टाइगर सीमेंट का सुपर फाइन बॉन्ड और हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बनाए घर का कोना कोना मजबूत। ब्लैक टाइगर सीमेंट, कमाल का काम, टाइगर है नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में यूपी में कायम हुआ है कानून व्यवस्था का राज। 2017 से पहले दंगे फसाद, अवैध कब्जे, उगाही और महिलाओं के विरुद्ध अपराध से जनता त्राहिमाम कर रही थी, लेकिन बीते 8 वर्षों में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस से भयमुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश। बड़े अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए की कार्रवाई की गई। दुर्दांत अपराधी या तो एनकाउंटर में मारे गए या सलाखों के पीछे पहुंचाए गए। माफिया के अवैध कब्जे से लगभग 3000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर उन पर गरीबों के लिए बनाए गए हैं आवास। पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, महिला पीएसी बटालियन और सीसीटीवी कैमरों के जाल ने सुरक्षा व्यवस्था को बनाया है अत्याधुनिक। स्मार्ट पुलिसिंग का परिणाम है कि महाकुंभ 2025 में 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान किया, लेकिन मामूली अपराध की घटना भी नहीं हुई। सेवा, सुरक्षा एवं सुशासन का आधार, डबल इंजन की सरकार। दीवार पे कितना डैम्प है यार, पिलर में भी फ्रैक्चर। मैं तो नाम वाला सीमेंट ही लाया था, किसी काम का नहीं निकला। सीमेंट सिर्फ नाम वाला हो तो घर हॉरर स्टोरी बन सकता है, इसीलिए लाएं काम वाला सीमेंट। ब्लैक टाइगर सीमेंट का सुपर फाइन बॉन्ड और हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बनाए घर का कोना कोना मजबूत। ब्लैक टाइगर सीमेंट, कमाल का काम, टाइगर है नाम। इंडिया दे फूड वेस्टेज तो बेसी डांगर दरकार आसे। बेसी मानु रातिते भात नाखाई किना घुमा भी आसे। आमी खान कोम्बा खोताते ध्यान राखिले इन्वायरमेंट और दूसरा मानु के मदद करिबोले पारिबो। आमी खान इतु 6टा खोता के ध्यान राखिले एकटा रिस्पॉन्सिबल ईट राइट सिटीजन होबो। किमान लागे इमान ही किनिबी। फूड वेस्टेज न होबो कारणे कमटी सर्विंग्स ही लुबी। खाना बची जाइले ना फेलाबी और पारियातक बचिया खाना तो अलग सब्जीते भी चुलाबी। दाल, चना और अलग सुका खाना तो हवा न जाबोले लगा दबाते रखिबी। पत्ता, सब्जी, फ्रूट्स, दूध, दही खान तो खुदाई फ्रिज दे रखिबी। बची जा खाना तो आसपास लगे मानु खान के दी दिबी। और आखिरते पत्ता, सब्जी, फ्रूट्स खान तो रिसाइकल करिगिना खाद बनाबी। Every day goes through 136 quality checks, giving you a thick and tasty, perfect cup of tea. No wonder Nestle Everyday is your #1 choice. ब्लैक टाइगर सीमेंट, कमाल का काम, टाइगर है नाम। Welcome back. Moving on to the next news. After the all-party meeting called to brief the ongoing conflict with Pakistan, Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju said political parties are the voice of the people and the leaders speaking in one voice. He said Operation Sindoor is also one of the successes. Rijiju expressing his concern over fake news being propagated in social media platforms. He appealed to all not to trust any fake news coming out of the country or from within the country and to trust only authentic information. न्यूज़ के बारे में हमारे कई सदस्यों ने उठाया है, जो फेक न्यूज़ है हमारा देश का एकता को कमजोर करने के लिए कई गलत नैरेटिव्स
या फेक न्यूज चलाने का प्रयास कर रहा है, इसका मुद्दा सामने में आया है और हम अपील करना चाहते हैं कि ऐसे समय में कोई फेक न्यूज गलत तरीके से नैरेटिव कोई अगर चलाते हैं बाहर से देश के अंदर में, तो उसको विश्वास ना करें और कोई भी न्यूज ऑथेंटिक हो तभी इसको विश्वास करें। इट इज अ कंपोजिट मीटिंग, सो रक्षा मंत्री ब्रीफ्ड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, आज तो जैसे मैंने कहा एक ब्रॉड इंफॉर्मेशन कंसेंसस सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट में कैसे काम करना चाहिए लोकतंत्र में, और विशेष करके संसदीय परंपरा में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पीपल्स वॉइस होता है पॉलिटिकल पार्टीज और एमपीज, तो इसलिए सबका वॉइस ऐसे समय में एकजुट आना ही मैं मानता हूं कि ये भारत का सक्सेस है। देखिए, कुछ इंक्वायरीज, कुछ इंफॉर्मेशन मांगे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये ऑन गोइंग ऑपरेशन है, इसलिए पूरे एक घटना को अलग से ब्रीफिंग या अलग से उसको प्रेजेंटेशन करना सही नहीं है, क्योंकि घटना चल रही है, आप सबको मालूम है, इसलिए उसको उस तरीके से ब्रीफिंग नहीं होते हैं। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का ब्रॉड कंसेंसस के लिए ये बैठक था, इसलिए वैसे ही बैठक चली और संपन्न हुआ। इसलिए मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज को मैच्योरिटी दिखाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो आपको, जैसे मैंने कहा कि ऑपरेशन इस वक्त जो ऑपरेशन सिंदूर का पहला जो स्ट्राइक होने के बाद जो गतिविधि चल रहे हैं, उसको लेकर के अलग से ब्रीफिंग करने का अभी परिस्थिति ठीक नहीं है और वैसे नियम नहीं है, इसलिए टेक्निकल ब्रीफिंग या अधिकारियों को नहीं बुलाया। देखिए, फेक न्यूज के बारे में हमारे कई सदस्यों ने उठाया है। जो फेक न्यूज है, हमारा देश का एकता को कमजोर करने के लिए कई गलत नैरेटिव्स या फेक न्यूज चलाने का प्रयास कर रहा है, इसका मुद्दा सामने में आया है और हम अपील करना चाहते हैं कि ऐसे समय में कोई फेक न्यूज गलत तरीके से नैरेटिव कोई अगर चलाते हैं बाहर से देश के अंदर में, तो उसको विश्वास ना करें और कोई भी न्यूज ऑथेंटिक हो तभी इसको विश्वास करें। इट इज अ कंपोजिट मीटिंग, सो रक्षा मंत्री ब्रीफ्ड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। A devastating cyclone struck Sri Bhumi's Sardarashi Gaon Panchayat in Nayagram on Tuesday morning, completely destroying the house of Manojit Das and his family. The fierce storm caused their house to collapse while the family was asleep, trapping them under debris. Hearing their cries, neighbors rushed to rescue Manojit Das and his family from the rubble. Miraculously, the couple and their family survived but are now homeless, taking shelter in a nearby house. Manojit Das, a victim of this tragedy, has been tirelessly seeking assistance through the Pradhan Mantri Awas Yojana but has received no support despite repeated appeals to government offices. The family and local residents are now appealing to the government, district administration and political leaders for urgent help to rebuild their house. Manojit Das and his wife in tears are pleading for aid to restore their lives. The incident highlights the vulnerability of families in cyclone-prone areas and the urgent need for effective disaster relief and housing support. তুফানে যেটা করছে আমরা খুব লজ্জাজনক, বর্তমান যুগে এরকম গড় নাই। এই গড়টা যে করছে এরা যে বাইরে হয়েছে গড় থেকে উপরওয়ালার কৃপায়, ওরা তো নিজে বাইরে হইতে পারছে না, গ্রামের লোক আসে, আশপাশের লোকেরা আসে, ওরা ঠান্নিয়া উন্নিয়া বাইরে করছে। এরা যে মানুষ দিনমজুর বলতে দরিদ্র বললেও তো লজ্জা লাগে, মহা দরিদ্র। ওরা আনলে খাইব, এখন মনে হয় না ওদের কাছে 5 টাকা আছে নগদ বলিয়া। তাই আমরা প্রার্থনা করবো সবার কাছে, উচ্চপদস্থ যারা পদাধিকারী আছেন অতি সত্তর যাতে এর একটা গড় ব্যবস্থা করিয়া দিলে খুব কৃতার্থ হইব গ্রামবাসীরা। মনে করবো সরকারের কাছ থেকে বৃহৎ একটা জিনিস হয়েছে, এরা অতি সত্তর একটা গড়ের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া যাতে যায়। আর ওরা খাওয়া দাওয়ার যা ব্যবস্থা, একদম পয়সা নাই, আমরা গ্রামবাসীরা কিছু কালেকশন করিয়া আপাতত তারা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থার লাইন করিয়া। We'll take another short break, so stay tuned. घर लाएं काम वाला सीमेंट। ब्लैक टाइगर सीमेंट का सुपर फाइन बॉन्ड और हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बनाए घर का कोना कोना मजबूत। ब्लैक टाइगर सीमेंट, कमाल का काम, टाइगर है नाम। State Institute of Hotel Management Dimapur Academic Year 2025 to 26 নিমিত্তে এডমিশন শুরু হৈছে।
SIHM Dimapur de offer kuri ase hospitality aro hotel administration de 3 sal laga bachelor's degree kundu NCHMCT logot affiliated ase aro degree certificate to Jawaharlal Nehru University New Delhi bra award koribo. Food production aro food and beverage service laga 1.5 year diploma program bi offer kuri ase SIHM Dimapur de. SIHM Dimapur laga mission do quality education aro personal growth ase. Institute laga dedicated faculty, experienced mentors aro hands-on learning environments pra students can get training di ase. Itu egla nohoi yate career ge age loi jabole nimide state of the art infrastructure, top package, thaga laga bishi bhal placement, maiki mota nimide alag hostels aro strong industry partnerships bi di ase. Apni luxury resort manage kurubole noholibi cruise line de chef hobole sapna ase bole SIHM Dimapur do apni ke success kurubole launch pad ase. To naruki na juldi kuribi admission kola ase. Aru bi jankari lobole call kuribi 9233895656 9863177951 day. Visit www.sihmdimapur.com. दीवार पे कितना डैम्प है यार, पिलर में भी फ्रैक्चर। मैं तो नाम वाला सीमेंट ही लाया था, किसी काम का नहीं निकला। सीमेंट सिर्फ नाम वाला हो तो घर हॉरर स्टोरी बन सकता है, इसीलिए लाएं काम वाला सीमेंट। ब्लैक टाइगर सीमेंट का सुपर फाइन बॉन्ड और हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बनाए घर का कोना कोना मजबूत। ब्लैक टाइगर सीमेंट, कमाल का काम, टाइगर है नाम। Welcome back. At least 13 civilians were killed in the Bunch sector of Jammu and Kashmir during intense firing and shelling by Pakistani forces along the line of control on Wednesday, according to the Ministry of External Affairs. In addition, 59 people sustained injuries, including 44 in Bunch, as a result of Pakistan's ceasefire violations across the LOC. Over these issues, AIMIM chief Saudin Owaisi says that government has a golden opportunity in Kashmir to confront Pakistan and adopt Kashmiris. Those who have lost their lives in Bunch should be declared terrorist victims, and government should compensate and provide houses for them. अब कश्मीर में गवर्नमेंट के पास एक बहुत सुनहरा मौका है, तारीखी मौका है कि वो यकीनन पाकिस्तान को कन्फ्रंट करें, मगर कश्मीरियों को अडॉप्ट करें। आप कश्मीरियों को खरीब करें, और ख़ास तौर से मैंने कहा कि जो पूंछ में जो लोगों की मौत हुई, सिविलियन लोगों की, और उरी में जो लोग ज़ख्मी हुए, जिनके घर को नुकसान पहुंचा, गवर्नमेंट उनको टेररिस्ट विक्टिम का ऐलान करे, क्योंकि पाकिस्तान शेलिंग में उनकी मौत हुई है, और सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के तहत मरने वालों को एक्सग्रेशिया दे और सरकार उनका घर बना के दे। और मैंने कहा कि साउथ कश्मीर में गवर्नमेंट को बहुत एहतियात से काम करने की ज़रूरत है। वहाँ के यूथ को हमको खरीब करना है, और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसका मेरी नज़र में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि मुरीद के और भावलपुर पर अटैक होना, ये नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं, ये बहुत अहम जिसको हमको समझने की ज़रूरत है। मिलिट्री स्ट्रेटेजी वाइज आप देखेंगे, अब हमारे देश के लिए 2 फ्रंट हॉस्टिलिटी होगी, LAC और LOC पर, इसलिए कि जब 16 में उरी हुआ, 2019 में हम बालाकोट किए, आज हमारी 50,000 फौज गलवान और पे बैठी हुई है। तो ये 2 फ्रंट हॉस्टिलिटी को हमको देखने की ज़रूरत है। चाइना से हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट, चाइना से इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो रहा है। तो हम चाइना पर भी इम्प्रेस करें कि वो पाकिस्तान को, TRF को, जितने टेररिस्ट वांटेड हैं इंडिया, उसको हवाले करें। और गवर्नमेंट से मैंने गवर्नमेंट से कहा कि आपने अच्छा जवाब दिया OIC को, और तुर्किया को हमको समझाना है कि तुर्किया
पूरे विश्व में एक ऐसा कंट्री है जो अपने ही देश में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कर्ड्स, उनको बॉम्ब करता है। इराक में जब तक उनसे डील नहीं हुई वहां बॉम्ब करता था, अब सीरिया में भी बॉम्ब करता है वो। तो तुर्की को समझाने की जरूरत है कि जब आप कर्ड्स के ऊपर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको आप एक्शन ले सकते हैं, तो भारत पे क्यों वो सवाल उठा रहे हैं। और हमने कहा कि ये आज पाकिस्तान इसको और एस्केलेट ना करे। इस सिलसिले में आज ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में है, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर भी दिल्ली में है। और जो देश में मैंने कहा कि जो एक यूफोरिया है, इसको सरकार को देश को और मुत्तहिद करने के लिए और देश को ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो लोग मैंने जिक्र किया, हिमांशी उस बच्ची का जिसने अपने पति को खोया 6 दिन की शादी के बाद, कि किस तरह सोशल मीडिया पर उसके ऊपर रिकेक हमले किए गए। और आखिर मैंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स और CNN ने एक कहा कि बठिंडा में एक रफाइल गिरा है। वो सही है गलत है हम नहीं जानते, मगर हमने एक गवर्नमेंट से कहा कम से कम इंडियन एयरफोर्स को आप कहिए कि उसको डिनाई करे, ताकि हमारे आर्म फोर्सेस का मोराल और उनके रेपुटेशन में कोई कमी ना आए। थैंक यू। That's off now. For more news and updates, keep watching Hornbill TV. दीवार पे कितना डैम्प है यार, पिलर में भी फ्रैक्चर। मैं तो नाम वाला सीमेंट ही लाया था, किसी काम का नहीं निकला। सीमेंट सिर्फ नाम वाला हो तो घर हॉरर स्टोरी बन सकता है, इसीलिए लाएं काम वाला सीमेंट। ब्लैक टाइगर सीमेंट का सुपर फाइन बॉन्ड और हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बनाए घर का कोना कोना मजबूत। ब्लैक टाइगर सीमेंट, कमाल का काम, टाइगर है नाम। 3, 2, 1, go. And we all need a little more clarity under the details. About life, people and events that truly matter. Because sometimes news is more than mere information. From credible news organizations, credible news, and from credible and award-winning journalists. Because proper news can not only inform our lives but also change the way we look at it. In-depth and straight to the point, because the truth deserves clarity. We pursue events that are not only important to you but also useful for a life's perspective. We are Hornbill TV. Join us every month on Health Talks on Hornbill TV, your trusted health show, bringing you expert insights from top doctors, updates on treatments, and wellness tips for a better, healthier life. From lifestyle diseases to mental health, we cover it all because your health matters. Only on Hornbill TV. The Jawaharlal Nehru National Solar Mission, or the National Solar Mission, was launched on 11th January 2010. JNSM is a major initiative of the Government of India with active participation from states to promote ecological sustainable growth while addressing India's energy security challenges. The National Institute of Solar Energy has assessed the country's solar potential of about 748 GW, assuming 3% of the wasteland area to be covered by solar PV modules. Solar energy has taken a central place in India's National Action Plan on Climate Change, with National Solar Mission as one of the key missions. It will also constitute a major contribution by India to the global effort to meet the challenges of climate change. The mission's objective is to establish India as a global leader in solar energy